Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, today we are going to start our new chapter which is control and coordination. In the previous chapter we discussed about different life processes like digestion, respiration, transportation and excretion. Now we will discuss about the control and coordination system of the living organism. You know that living organism have specific processes or some specific characteristics जो कि non living के अंदर नहीं होती. Like in the case of living organisms, which in which we can include plants and animals. Plants and animals, they are living and they show some particular movement, or we can say they show some particular type of response. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि वो किसी न किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करता है और मूवमेंट शो करता है. कुछ भी बोल सकते हैं हम रिस्पॉन्स या मूवमेंट. Now, ये जो responsive movement है, this is the characteristic feature of living organism, in which we can include the plants and animal also. ये जो response है, इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं. Suppose you touch to a hot plate, आपने एक बहुत गर्म प्लेट को हाथ लगाया, and suddenly you pull your hand back. या फिर when you enter into a bright light, आप एकदम से बहुत ज्यादा रोशनी में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइट के रूम में एंटर कर रहे हैं, देन योर आईज विल स्टार्ट मींस आपकी जो आईज होती है उसका जो इरिस है इट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. आज इरिस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा. तो दिस आर द सम चेंजेस और दिस आर द सम रिस्पॉन्सेज व्हिच वी शो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. और एनवायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करते हैं. इन दिस एग्जांपल्स वी टॉक्ड अबाउट द ह्यूमन और द एनिमल्स. Same type of responses were also shown by the plants. Plants भी ऐसे ही कुछ response show करते हैं. Like plants, in the plants we can say that root grows towards the water. Root जो है वो water के through towards grow करती है, नीचे gravity की तरफ या water की तरफ grow करेगी. And the shoot will grow towards the light. And if it touch the plant, which is the sensitive plant, like जिसे हम छुई मुई बोलते हैं, या Mimosa pudica, which is the scientific name of छुई मुई. इस तरीके की प्लांट को अगर हम उसकी लीफ को टच करते हैं देन वी स्टार्ट दैट उसकी जो लीफ है वो क्या होती है, इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, सिकुड़नी शुरू हो जाती है. तो दीज आर द सब अनदर एग्जांपल ऑफ द रिस्पॉन्सेस. ये कुछ रिस्पॉन्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स शो कर रहे हैं. एंड दीज रिस्पॉन्सेस आर अगेंस्ट द एनवायरमेंटल फैक्टर. जो रिस्पॉन्स है ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अगेंस्ट ही होते हैं. दीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच शो सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेस, these environmental factors are known as stimules. इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं stimules. तो हम ज्यादा एग्जांपल्स की तरफ नहीं जाएंगे कि मुझे पता है that is very important and interesting chapter and you will able to understand it clearly. So let's start with our chapter which is control and coordination. Before we start the control and coordination, we should understand some important factors like stimules. हम stimules की बात कर रहे थे. Stimules क्या होते हैं? What are the stimules or stimuli? हम stimuli भी बोल सकते हैं. Stimule is the singular and if we talk about the many stimuli then we use the word stimuli. So what are the stimuli? Stimuli क्या होती हैं? Stimuli are the change in the environment to which any living organism respond. किसी भी environment के अंदर जो भी changes हो रहे हैं that changes according like changes क्या हो सकते हैं, heat हो सकता है, cold हो सकता है, light or means we can say that water, gravity, that's some changes which are present in the environment. And if against these changes any living organism respond then we are saying that it is showing any response. So we are talking about the stimuli. Stimuli are these are the changes in the environment to which any living organism respond. ये वो changes होते हैं जिसके लिए कोई भी living organism respond करेगा. Response किसी भी तरीके का हो सकता है. To which any living organism will respond. अब ये response की हम बात कर रहे हैं. Like हमने जो example दिया था, if we enter in the bright room then our eyes start contracting, iris of the eyes start contracting. So here the stimule इस एग्जाम्पल के अंदर the stimule is the light. Stimule क्या हुआ, light, and the response is contraction in our iris. उसी तरीके से
अगर हम बात करते हैं कि हमने किसी हॉट प्लेट को, हॉट यूटेंसिल को टच किया, एट दैट टाइम द स्टिम्यूल विल बी द हीट. उस केस में स्टिम्यूल क्या हो गया, हीट, एंड रिस्पॉन्स क्या होगा, दैट वी आर पुलिंग बैक अवर हैंड, कि हम हाथ को एकदम से पीछे खींचेंगे. This is the response. So we are talking about the stimules and the responses. हम stimule और response के बारे में बात कर रहे हैं. Stimules क्या है, the changes in the environment. के examples अगर आप चाहें लिखना, examples क्या हो सकते हैं stimules की? Stimules can be heat, cold, light, water, gravity, anything. और इस तरीके के चेंजेस जो एनवायरनमेंट के अंदर हो रहे हैं, these changes will known as stimulus. और उसके अगेंस्ट जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं, that reaction will known as response. That's, I hope this is clear for you. Now this response, अब हमने बात कर ली कि स्टिम्यूल्स होते हैं, स्टिम्यूल्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है, बट ये जो रिस्पॉन्स है ये कैसे होगा? इन द केस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वी टॉक अबाउट दैट दिस. इन द केस ऑफ प्लांट के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत स्लो होता है. आपने प्लांट की स्टेम की ग्रोथ देखी है टुवर्ड्स द लाइट, सडनली तो नहीं ग्रो करता, it takes time. So we can say that in the case of plants the response is very limited and it's slow. Plants के अंदर जो response होते हैं against any environmental factor, against any stimulus is very limited and slow. But in case of human or in the case of animals, the stimulus are sudden. एकदम से रिस्पॉन्स शो होता है. आपने एकदम से अपना हाथ पीछे हटाया विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट, कुछ नहीं सोचा, जस्ट यू पुल योर हैंड बैक व्हेन यू टच अ हॉट यूटेंसिल. So in the case of plant, the response is very slow and in the limited way, but in the case of animal, it's a sudden changes. एकदम से changes show हो सकते हैं, बहुत fast changes show हो सकते हैं. अब ये changes कैसे होते हैं, हमें इसके बारे में बात करनी है चैप्टर के अंदर. For these changes, our organs should be work together. जब भी हम किसी भी स्टिम्यूल के अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे, व्हेन वी आर शोइंग रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी स्टिम्यूल्स, our different organs work together. हमारे बहुत सारे organ काम कर रहे हैं, like हमारा brain काम कर रहा है, हमारी muscles काम कर रही हैं, our hand is working, all the body parts are working together to show a response. अगर ये response जो है different organs के बीच में एक controlled manner के अंदर होता है, then we call it in a coordination. This is known as coordination. That's what we are going to study in this chapter, that how the control and coordination done in our body. कैसे plants के अंदर और animals के अंदर ये control and coordination होता है. तो coordination क्या हुआ? Now let's talk about the coordination. हम जो coordination की बात कर रहे हैं, क्या है ये coordination? Coordination is the working. Coordination is the working of the working together of the different organ, the working together of various or different means जितने body parts हमारे एक response में work कर रहे हैं, working together of different organs of any living organism, in a systematic way, in a systematic way, so that a particular response can be produced. एक particular response जो है वो produce कर सके, that is known as coordination. Systematic way to produce a response is known as coordination. Response. So what is coordination? Coordination is the working together of different organs of any living organisms in a systematic way, so that it can produce any response. अब systematic way में का क्या मतलब है? Means जैसे ही हमारे दिमाग ने, हमारे brain ने सिग्नल दिया, हम एकदम से हाथ को पीछे हटाएंगे. So it's a systematic way. अगर brain सिग्नल नहीं देगा, अगर brain का सिग्नल left तक पहुंच गया, हमारा हाथ टच कर रहा है किसी hot plate को, but signals is going towards the left, then is that be useful for us? No, it not will be. So same चीज यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि in the case of coordination or in the case of controlling, control होना चाहिए हमारे हर एक response के ऊपर, and that response should be controlled in a coordinating way. Coordination way मतलब कि सभी के सभी organ एक systematic way में ही coordination करें ताकि एक particular response produce किया जा सके. So this is about the stimulus and the coordination, and now we will move forward about this chapter further.
Now we are talking about the control and coordination in the plants. Like in the case of plants, we are saying that this control and coordination is very limited and it is very slow. In the case of plants, this control and coordination, or we can say that response, plants जो भी response show करते हैं, that response will is present in the way of their growth. प्लांट के केस में जो रिस्पॉन्स शो होते हैं वो उनकी ग्रोथ की फॉर्म में होते हैं, मींस प्लांट शो ग्रोथ. अगर हम बात करें स्टेम की, दैट इट्स मूविंग टुवर्ड्स द लाइट, स्टेम जो है लाइट की तरफ मूव कर रहा है. इन दिस वी कैन से दैट प्लांट इज ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट एंड रूट इज ग्रोथ टुवर्ड्स द water or towards the gravity. In both of the cases we can say that plant is growing, but in the case of human being this is not related with growth. आपने हाथ को पीछे हटाया गर्म चीज को छूने पे, कुछ ग्रोथ से रिलेटेड हुआ नहीं. सो इन द केस ऑफ प्लांट्स इट्स दिस रिस्पॉन्स कैन बी रिलेटेड विद द ग्रोथ, बट इन द केस ऑफ ह्यूमन इट इज नॉट done. But in the case of plants, this control and coordination is done or controlled by the hormones, because plants do not have any brain. प्लांट्स के अंदर तो कोई ब्रेन नहीं होता ना, तो प्लांट्स के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो भी रिस्पॉन्स शो किए जा रहे हैं अगेंस्ट एनी एनवायरमेंटल फैक्टर, चाहे वो हीट के अगेंस्ट हो, वाटर के अगेंस्ट हो, लाइट के अगेंस्ट हो, दीज रिस्पॉन्सेज आर नॉट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बाय एनी पर्टिकुलर ऑर्गन. प्लांट के अंदर किसी भी ऑर्गन के थ्रू ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, बट इट इज डन बाय दी सम हार्मोन्स, एंड दी हार्मोन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दी प्लांट्स आर नोन एज फाइटोहॉर्मोन. इनके बारे में हम बात करेंगे व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द केस ऑफ प्लांट्स. बट इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग और इन द केस ऑफ एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, इन द एनिमल्स दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द टू इंपॉर्टेंट पार्ट. एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो पार्ट से होता है. फर्स्ट इज द नर्वस सिस्टम एंड अनदर वन इज द हार्मोनल सिस्टम. Hormonal system, or we can call it the endocrine system. Endocrine system. So here, in the case of human being, or two systems work together for particular control and coordination. Any responses against any environmental factor, environmental stimuli is controlled and coordinated by the two systems. In the case of animals, first is the nervous system and second is the hormonal system or endocrine system. Nervous system, it's a very well developed system, बहुत अच्छे से developed system है जो बहुत control करता है, and both of these system work together. दोनों ही system मिलके organs को control करते हैं, coordinate करते हैं, so that particular response can be generated. In the case of animals, we are talking about the animals, but in the case of some lower multicellular organism, सभी एनिमल्स के अंदर ये दोनों सिस्टम हो, इट्स नॉट पॉसिबल. इन द केस ऑफ सम सिंपल organisms, or we can say that lower multicellular organism, like example of hydra we take. Hydra is a multicellular organism, but it's a lower, कि इतना developed system नहीं होता हाइड्रा के अंदर. In such type of lower multicellular organisms, this control and coordination is done by only nervous system. हाइड्रा के अंदर, like यहाँ पे अगर हम example लिख रहे हैं, that is the hydra. Hydra is a multicellular organism in which only the nervous system is responsible to show the coordination. सिर्फ nervous system ही सारा control कर रहा है और nervous system भी coordination कर रहा है. But in the case of means higher multicellular organism like us, in the human beings, this control and coordination done by two systems. First is the nervous system and second system is the hormonal system. दोनों ही system मिलके काम करते हैं किसी भी environmental factors के against और stimulus के against response show करने में. Means control and coordination in the case of animals in the higher multicellular organism done by two system, nervous system and hormonal or endocrine system. So these are the two systems for about we have to study in detail. इन दोनों ही system के बारे में हमें बहुत detail में पढ़ना है. So we are starting our this chapter with the control and coordination in the animals. This chapter is divided into two parts: control and coordination in plants and control and coordination in animals. So we will start with the control and coordination in animals.